Dear students, welcome to this YouTube channel Social Classes. Today we are going to discuss most important questions political science BA third semester. Name of the paper is Indian Government and Politics. Unit first. What is preamble? Discuss the main features of the preamble of the Indian Constitution and then critically evaluate the preamble to the Constitution of India. And next, write down salient or basic features of Indian Constitution and then evaluate the legislative and administrative relations between the center and the states in India. स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया गया है और आने वाले समय में इसको पंजाबी और हिंदी मीडियम में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के बना दिए जाएंगे और अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। जैसे यूनिट वाइज आपका सिलेबस है वैसे ही इसके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम है, क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि मोल्ड करके क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं। उसी तरह की कोशिश यहाँ भी की गई है। And next question is Indian Constitution is federal in form, unitary in spirit. Discuss. And then discuss the features of Indian federalism. And then Indian Federation is quasi-federal. Discuss. Students, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपको 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट में दिए जाएंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना है। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। And then what are the unitary features of the Indian Constitution? And next, the Constitution of India is neither purely federal nor unitary. It is a composite of a novel type. Discuss. And then discuss the legislative, administrative and financial relations between center and the states in India. ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन थे। अब है यूनिट सेकंड के क्वेश्चन। Critically examine the right to equality and right to freedom included in Indian Constitution and then critically evaluate the fundamental rights mentioned in Indian Constitution. And next is what do you mean by fundamental rights? Explain in detail rights to equality and right to freedom. And then what do you mean by fundamental rights? Explain in detail the nature of them. And next is what do you mean by fundamental rights? Explain in detail their nature or characteristics and also explain whether the fundamental rights are absolute. ये क्वेश्चन जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग पूछा गया दोनों क्वेश्चंस में, ऊपर वाले में, इसमें भी, उसके ऊपर वाले में भी, तो उसमें आपने मीनिंग देना है, इसकी डेफिनेशंस देनी है, 3 डेफिनेशंस देनी होती है। इसके अलावा पहले में डिटेल राइट्स टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के बारे में पूछा गया और नेक्स्ट में है एक्सप्लेन डिटेल द नेचर, यहाँ नेचर बतानी है। उसके बाद वाले में भी मीनिंग पूछा गया और साथ में इसकी नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती हैं, इसको फीचर्स भी बोल देते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। यहाँ 3 पार्ट इसके बन गए हैं तो मार्क्स भी उन्हीं 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो जैसे कि है 4 मार्क्स का मीनिंग आ गया इसका, उसके बाद 10 मार्क्स की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद 4 मार्क्स का इसका आगे वाला पार्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के मार्क्स जो डिवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ साथ में दिया गया है। इसी अगर आप इसका एक पार्ट छोड़ देते हो तो उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो तीनों पार्ट अगर पूछे गए हैं, तीनों पार्ट्स का आंसर देना है, किसी का ज़्यादा देना है, किसी का कम देना है। जैसे कि ज़्यादा मार्क्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला नेचर देनी है तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स देने हैं, दूसरे वाले को कम देना है। And next is explain in detail the fundamental rights given Indian Constitution. And next, distinguish between fundamental rights and directive principles of state policy. And then make a critical evaluation of the directive principles of state policy included in the Indian Constitution. And next is how directive principles of state policy can be helpful in the establishment of a true welfare state in India. And next is evaluate the directive principle as an instrument of socio-economic progress.
स्टूडेंट्स इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी के पूरे लेक्चर्स पूरे सिलेबस के यहाँ दिए गए हैं, और भी बाकी पंजाबी कंपलसरी के दिए गए हैं। बाकी क्लासेस के भी कुछ जैसे सोशियोलॉजी के और पंजाबी कंपलसरी के भी कुछ लेक्चर्स यहाँ अपलोड किए गए हैं। And next, should the Indian Parliament make directive principles of state policy justiciable, which would surely establish India as a welfare state in a real sense? Give your arguments. And then discuss the directive principles of state policy with their implementation through various constitutional amendments. And next, how far the directive principles of state policy have been implementation in India. And then critically evaluate the fundamental duties mentioned in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में है प्राइम मिनिस्टर इज़ द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट डिस्कस। एंड नेक्स्ट डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन ए कोलिशन गवर्नमेंट। एंड देन एक्सप्लेन इन डिटेल द पावर्स एंड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, गिव सजेशंस टू रिमूव दैम। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो पहला 12 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट इसमें 6 मार्क्स का, और इस तरह टोटल इसका 18 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो इस दोनों पार्ट्स को आपने डिटेल में लिखना है। एंड देन एवेल्युएट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट डिस्कस द अपॉइंटमेंट पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, क्रिटिकली एग्जामिन द पावर जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। And next is write a note on the use of power judicial review of India Supreme Court. And next is Supreme Court protects the fundamental rights and maintains the supremacy of the Constitution. Elaborate this statement. And next is describe the composition, powers and functions of Supreme Court of India. And then discuss the appointment, powers and position of Speaker of Lok Sabha. And next is what are the functions and powers of Speaker of Lok Sabha. And next explain the powers and position of the President of India. And next critically evaluate the election procedure of President of India. And then what are the emergency powers of President of India. And next discuss the powers and role of Indian Parliament. ये यूनिट थर्ड था। अब फोर्थ यूनिट, how is the governor of your state appointed, discuss his functions, powers and position, is he only a rubber stamp. And then how the governor is appointed in India, describe the appointment, powers and position of the governor. And next discuss the appointment procedures, powers and functions of governors of an India state. And next discuss the composition, functions and powers of state legislative assembly. And next is critically evaluate the composition and powers and functions of state legislative assembly. And next is discuss the procedure of making an ordinary bill a law in a state legislature in India, how the chief minister of state is appointed in India, discuss powers and position of chief minister. And then how is the chief minister of state appointed in India, discuss powers and position of chief minister. And next is discuss the powers and position of state chief minister in India. And next discuss the appointment, powers and functions of chief minister of an India state. And next is discuss the appointment and powers of the state council of ministers. And then discuss the composition, functions and powers of the state high court. स्टूडेंट्स ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। एंड यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय योर हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर गोल। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।